Okay, so that was film from Francis Joseph Gira, Pillow Nothing But Life. Awesome film, guys. Come on, the person, the direction was beautiful. The performance, the actor was really good. और एंड में जो मैसेज दिया, the moment he left his pillow, the moment he left his inhibitions और सारी चीजें behind, he started living life. That was the whole message. I guess, as far as I know. तो ये पूरा मैसेज था. Now the next film, which is coming, is Aurora from Canada, directed by Kara Hintz, and duration is 18 minutes. So I guess we're gonna move ahead. The second film in BIFF large short film category, Aurora from Canada. Can we have the movie, please? It's beautiful here. Nothing like in the pictures. It's like a dream. The nights here are amazing, and the stars are indescribable. Every night I just lay under the stars and look into the void. And I think of you out there, alone, Azara. I understand why you lied to me. You knew I'd never get on that ship without you. But I hope these past few days have given you the time you needed to say goodbye. So please, get on board when the shuttles come back. We are all waiting for you to arrive. I love you, Azara. Okay, next song. Oh wait, just leave it on this one, Aurora.
Aurora borealis. A phenomenon of light that looks like curtains or arcs of light appearing in the sky above. Kind of like the folds and lines in your iris. Charged electrons are trapped in the planet's atmosphere in the polar regions. A rather dangerous phenomenon. Yeah, beautiful. Kind of like you. How am I dangerous? Maybe it's because you're reckless. And too spaced to concentrate. Oh no, I forgot the bucket in the car. Well, hurry, I don't want to dry out. Technically, this is your cash. Thought so. Here, use mine. The stickers on it help me see it go under. Always so clever, Aurora. And always so bright. Yeah. Reckless and bright, like our universe. Everything spins and everything orbits. Orchestrated in its perfect harmony. But the slightest alteration will cause it to ripple and move, disappear. But in all its chaos, even the universe knows when to let go. Sounds like quite the time back there. Oh, did you want to go back inside? No, I needed some air. Unless you want to. No, I'm good. I'm... yeah. I'm really glad we did this, Jake. Me too. This is your home, your memories, your life, all in these bones. The earth is a part of you. It's a part of all of us. And leaving your bones behind is going to be hard. So how did you like your first ever movie theater experience? Amazing. I loved how big the screen is. The screen? I take you to the last cinema in the country, and that's all you got for me. I loved the grittiness of it all. I'm surprised we're the only ones still here. Yeah, well, cinemas are an expensive, dying breed. Yeah, that's for sure. I love the ending. How he ended up building that house. I'm gonna do that for you one day. Like a hobbit hole with a front door painted bright blue. And big, beautiful sky roofs so you can watch the auroras at night. Jeez, Jake. Just because my boyfriend's an architect doesn't mean he has to build me a whole house. And a backyard big enough for a wedding. Hear me out. You can start your floral shop on Alpus. The first florist to arrange alien flowers. And I can design homes for people. And most important,
We'll be together. Do you want to marry me? Yes, Azara. Have I come across as totally crazy? No. I'm happy. I love you. And I want that with you. But are you still having nightmares? Nightmares, reality, what's the difference? Earth is my home. This is Aurora's home. Azara, humanity can't live here anymore. So I've heard. The government had all these shuttles for all this time, for all these years, just waiting for a crisis so we can leave. Not for all of us. What do you mean by that? I should go. Don't be silly, I'll drive you. How can your fear be departure, not loneliness? I mean, is it not painful seeing the world not how it used to be? Your mom asked me if you were riding with me. And I said I thought she was riding with you. Care to fill me in? I can't ride in the shuttle with any of you. It's complicated. It's not complicated. Look, I understand where you're coming from and what you're trying to do. You've got it all figured out, don't you? Yes! You're gonna stay behind. I don't care how amazing planet Alpus is gonna be. If Earth is gonna die, then we should die with it. Okay. Okay, let's say this super flare from the sun didn't fry our atmosphere. Let's say these past 3 years never happened. Would you be able to move forward with me? This has nothing to do with you and I. It's Aurora. Don't say her name. Then talk to me. Azara, we can get through this together. Just help me understand. I don't expect you to. I've had no time to say goodbye without you or my family or the government telling me to hurry and pack my things. I could never leave you. Well, you're gonna have to try. Now go. She helped me pick it out.
Hey, it's me. I just wanted to tell you that I sent the emergency shuttles my location a few hours ago. They should be here any minute. I know now more than ever what you were trying to tell me. This world is only a vessel to what life is. Being alone has taught me that home isn't a place. It isn't a spot where we collect history. Home is people, memories, love. And I thought that if I left Earth that I was somehow turning my back on Aurora. And it doesn't matter where in life you are. What matters is who you're with. And here I was, alone and naive, being so terrified to let go. But thank God I did. Because now I know, although my sister is in heaven and you're on Elpis, I know where my home is. Is it true what they say about Elpis? That you can see the auroras every night. Why don't I go find out? So this whole time, and I messages. told you I could never leave you. Too reckless of me? No, just very bright of you. At last, I know your heart, Azara. I know the sky may look different, and the wind has a strange feel. You remain the center of my home. And everything home is to us is love. So, ladies and gentlemen, that was Aurora from Canada, directed by Kara Haynes. And I'm going to read some comments. Rajat Active लिखते हैं beautiful message in a totally different way. Wow. Thank you, Rajat. You like the film. और डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी, लाजवाब फिल्म. थैंक यू मैम फॉर वॉचिंग अस एंड फॉर बीइंग विद अस. तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत सी फिल्में हम और भी देखने वाले हैं.
और आज के दिन कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में हैं. सोनू शिलन जी ने लिखा है अति सुंदर. Okay, so let's move on to the next film. The next film is The Normans. Normans is basically it's a documentary, it's a docudrama. तो इसमें आपको थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें भी पता लगेंगी. इसका ड्यूरेशन है 29 minutes. I know it's a bit long film, but again it's a long short film category, guys. तो इसमें तो थोड़ी बड़ी फिल्में आएंगी. And it's a very good cinema and it's very informative and it is made in a very entertaining way. So I know you will love it. And yes, so The Normans from Malta, duration is 29 minutes and directed by Maurice Miclef. So the next film is The Normans from Malta, directed by Maurice. Okay, so can we have the next? Ferocious and devout, and victorious colonizers. The Normans, with their unbridled desire for power and Christian fervor, used every weapon in their arsenal to reshape northern France, the British Isles, southern Italy and Sicily, and as far as the Holy Land. They were powerful rulers and state builders. Their legacy is unmistakably still evident. Malta's connection with the Normans was first mentioned in Malaterra's and Telesino's chronicles of Roger I and Roger II. Count Roger's capture of Messina in 1061 marked the initial step in the Christian conquest of Muslim Sicily by the Normans. The Norman legends found in the Maltese Islands fulfill four main conditions, namely, they are located or heard in a particular part of the Maltese Islands, that is, Mdina, Rabat and its outskirts. They emphasize the triumph of the cross over the crescent, whereby the Maltese have prided themselves of retaining their Christian faith throughout the Arab domination of the islands. They provided a popular interpretation of the coming of Count Roger to Malta, which is indeed a historical fact, and they attribute all the benefits derived from the Norman occupation to one individual, that is, Count Roger. Such traditions in Malta which center on Count Roger have been hyped up into two different kinds of legend. The first is synonymous with the toponymic legends which are designed to account for the origin of the place name. The second type consists of the exaggeration of importance of events or persons with a particular historical period. Toponymic legends related to place names include Midr al-Ferha, Witterum, and Ain Klip. Midr al-Ferha in Maltese means the streamlet or the small watercourse. It is the name given to the small inlet and the cliff on the north coast of Malta, situated beneath Il Attara, where Il Aus of Ras Dawara can be found. It is the roughest piece of ground on the side of the island, well known for its rough-cut rocks and lack of comfortable inlets from sea to land. Midr al-Ferha is called after a valley of the same name, which has its source in a group of other valleys in the Imtakhlep cliff and which runs all the way to the sea.
It is just a few miles from Mdina, and where it is traditionally pointed out as the site where Count Roger landed with his garrison. The stream, which passed through these valleys in times when they were still not dry, was too narrow to be called a river, Shmara in Maltese, so it was called Mijra, which means Il Majiri, or flowing water. The water flowing in that cliff used to be diverted into smaller channels by furrows in the rocks. That is why Mijra, separated from the main water, was called Ferha, which means Zaira, or small, or Makhruja min Okhra Akbar, which means coming out of a larger other. In Maltese, Ferha means both small or young and joy. This latter meaning, associated with the idea of running, derived from the word Mijra, suggests that it had a connection with the welcome attributed to Count Roger in 1090 during the Arab occupation of Malta. Thus, it was popularly associated as meaning the race of joy. Others pronounce the name as Mijja il Ferha, which means the joyful arrival. Legend refers that Count Roger the Norman, who came from Sicily to liberate the Maltese, landed at this rough spot at Mijra al Ferha with his knights. The Count was greeted by the Maltese Christians and was led in triumph towards Mdina. This is sustained by Professor Andrew Vella in his book Storiata Malta. He adds that these Norman knights mounted their horses, found some people to fight against them, and threw some of them to the ground. The others surrendered, and the rest ran away. Some also add that the name Mijra al Ferha was then given to this site to commemorate the event in memory of the Jiriyat Ferh, meaning the joyous run of the Maltese who had been to the cliff to greet their liberator. This legend has been quoted by many historians. Needless to say, the place is quite unsuitable for a landing. It can hardly harbor safely small ships, most especially if strong winds prevail, as noted by Caruana, although Count Roger landed in July, according to Luttrell. According to Casar Porlicino, this particular legend evidently owes its existence to folk etymology, which is the popular interpretation given to the place name, the correct explanation of which people could not understand or account for in any other way. It is fitting that this wrong interpretation should be removed once and for all from our minds. It is befitting that if those Maltese who lived in that part of the island knew that Count Roger had come to give them their freedom, they would have met him in a less precarious place. Therefore, Mijra al Ferha does not know its name to the arrival in our midst of Count Roger, but predates this event and comes from the topography of the place. A current of flowing water which, because of furrowing in the rocks, was separated from the larger flow, struck out on its own and was therefore called a ferch, or offspring of the original valley. By 1841, important modifications occurred in the Norman myths of Malta. Miege placed the Maltese Christians, who actually assisted Count Roger in his conquest of Malta, in Viede Rum, or Wit Rum. In fact, the name Wit Rum means the Valley of the Christians. According to Abela, legend has it
that on the landing of Count Roger, the Maltese Christians assembled in this valley, from where they proceeded to meet Count Roger. Abela quotes Malaterra, who described the Maltese by carrying palms and olive branches in their hands and chanting Kyrie eleison, which means Lord have mercy. In 1854, Vassallo mentions that it was further believed that on his way to the capital, Count Roger was led by the joyful crowd through the place commonly known as Wit Room. However, Malaterra's account shows otherwise, in the sense that it was not the Maltese Christians who went out to meet Count Roger, but the Captivi Cristiani, whom Roger subsequently carried back to Sicily, from where they departed to their respective homes. This legend is also attributed to folk etymology in an attempt to explain the word room, which is derived from Rome and used in the Arabic language to refer to both Latin and Greek Christians. The place referred to as Ain Klip, or Dog's Fountain, is connected to another legend referred to as Alet el-Bahriya. This legend recounts the Arab attempt to regain possession of Malta. According to Vella, it was not the Arabs of Malta that were involved in this uprising, but the Spanish Arabs, known as the Arabs of Boni Maimun. After the coming of the Normans in Malta, the Arabs chose the solitary place of Alet el-Bahriya, where they could reside unharmed and undisturbed, subject to the payment of an annual tribute. Legend tells us that at one point in time the Arabs refused to pay this annual tribute and secretly planned to regain control of the island. According to Casar Pollicino, their target date was planned during Easter week. However, Wettinger mentions that such a secret rising was planned during Holy Week, that is, during Christmas night. Their attack was to surprise the Maltese Christians in their principal church. The plot was discovered by a shepherd girl who overheard their plot, and the surprise attack was reverted back to the Arabs. Great secrecy was maintained, and on the chosen day, the Maltese Christians ambushed the Arabs near the fountain on the road leading towards Bahriya. As the Arabs approached the fountain, the Maltese Christians sprang on them shouting, Al Klip, which means, go for the dogs. Most of the Arabs who were caught by surprise were massacred, and the rest were pursued as far as Bahriya, which was surrounded and cut off from all form of communication. The Muslims were reduced to submission and exiled completely from Malta. Ferris states that a light vessel was sent to Sicily with the news, and that Roger II came over in person, executing the rebel leaders and expelling their followers. The name of Ain Klip was then given to the fountain to remain in memory of this conflict which took place at that time. The first part of this legend apparently is the counterpart of that of Witte Room, with the difference that the Arabs were now found to live in this segregated spot. The emphasis laid on the rallying call or battle cry of Al Klip, go for the dogs, during the attack on the conspirators is in itself of small consequence, but one should mention that such cries and supplications play an important part in such legends. The memory of Roger I has been further preserved at Rabat, where a band club has been named after him. One can still find a painting of Count Roger in this band club by Giuseppe Calì.
On the band club ceiling, one can also still find a painting which was part of the Norman insignia, as well as a checkered red and white flag. We are not sure whether the Normans had an eagle as part of their insignia, and it is believed that it was a lion. On the occasion of the feast of Corpus Christi, the statue of Count Roger on horseback is placed on a platform at the square in front of the parish church, after being paraded through the streets to the playing of band marches and even the waving of palm branches and handkerchiefs besides the Count's statue. A small distance from in front of the principal gate of Medina, one finds a pillar surmounted by a cross. It is believed that this cross was raised by the Maltese to commemorate their freedom by Count Roger. In bygone times, it was the custom of the cathedral clergy to process to the place on Palm Sunday, and the Passion of Saint Matthew was sung. An ancient, untraceable tradition in Malta says that the white and red colors of the Maltese national flag were bestowed by Count Roger after having freed the island from the Arabs and raising Malta to the rank of a small nation. It is believed that Count Roger granted it the privilege of its own banner and shield. The legend that Roger tore 2 squares from the Norman red and white checked flag and gave it to the Maltese as their banner is considered by many as sacred. In 1841, La Ferla strongly propagated this idea. In the old cathedral church, the national colours could be seen not only on the throne, but sculpted or painted in several other places and in paintings. Predictably, the legends continue to be popular. Just a few years ago, a monument in marble was erected at the time of the visit of Pope John Paul II on the occasion of the erection of the parish of Birgu in 1090 by Pope Urban II. A stamp was also issued by the postal authorities celebrating the supposed origin of the Maltese flag in the alleged grant by Count Roger in the same year. If this is taken to be correct, it would make the Maltese national colours amongst the oldest of such colours in the world. Needless to say, historians reject such myths and legends, as there is no evidence of any sort for the existence of a surviving indigenous Christian population in the Maltese Islands in 1091. Wettinger mentions that amongst the churches which were repaired or re-erected by the Maltese on regaining their freedom as a result of the invasion of Count Roger were the cathedral, the church of St. Salvatore at Medina, the chapel at Birgu, which immediately became a parish church, the chapel in the lost village of Hal Tartani, which existed around the 15th century, the church of St. Paul at Rabat, the chapels of Bisqualin and San Juan Tal Hereb, that of St. Matthew at Tal Ma'luba, and several others in Gozo. The church dedicated to Our Saviour was first mentioned in 1436, and later records say that the church was completely abandoned. However, other conflicting documents show that the church was well kept and endowed in the 16th century. At the beginning of the last century, the church ceased to exist, although parts of it were incorporated in private buildings. The church was not far away from the cathedral, and the name of a street there
recalls its existence, as well as a statue of our Saviour in a niche at the corner of the same street. Another popular belief mentioned by Ferris is that the annual procession to St. Gregory's Church at Zaytun, which used to take place on the first Wednesday after Easter, commemorates the island's liberation by Count Roger and an expression of thanks to Our Lady for the freeing of the island from the tyranny of the Saracens. This was one of the parish churches which, according to 1436 documents drawn up for Bishop Senatore de Mello, refers to it as Cappella Sancte Caterine. The only evidence that this church may be of Norman origin is the main door, which is typical Norman style. According to Abela, this original church was seemingly rebuilt circa 1492. Up to 1926, it was one of Malta's major feasts, celebrated with colourful pageantry and with the participation of representatives of all parishes and ecclesiastical and civil organizations. Despite the legend about the origins of this procession, Bohajar makes it clear that it was first organized on a national scale in 1543, when Bishop Domenico Cubeles issued a decree instituting a solemn and general procession to the Church of St. Catherine on St. Gregory's Day. The church itself looks upon Count Roger as the founder of Mdina Cathedral. A commemorative service was instituted by scholar, reformer, and peace-loving Bishop Alferran de Bussan, which is still held on the 5th of November each year. A painting of Count Roger by Alessio Erardi hangs in the sacristy of the cathedral. One can observe the Latin inscription in which Roger the Norman is called Liberator of the Islands and Founder of the Cathedral. All these legends undoubtedly place Count Roger in a romantic light. This is quite similar to Arthur and Charlemagne and their respective cycle of legends, as romantic figures developed along the lines of medieval chivalry. Count Roger did come to Malta and Gozo, and his successors, who finally conquered the islands, certainly exerted a far-reaching influence on the Maltese social life. One might object that the style of several surviving medieval buildings in Malta are described as Secolo Norman. These include the 13th century Palazzo Santa Sofia, the Gatto Murina Palace, which dates back from the 14th century. Palazzo Falsone is 15th century, while Casa Isabella, with its Gothic windows, is 16th century. All these can be located at Mdina. Whatever the term Secolo Norman means, it certainly does not imply that these buildings go back to Norman times. In fact, the dates of these buildings are indicative already, apart from the restoration and modification that they went through. It is said that the cathedral, which was destroyed by an earthquake in 1693, had been built during the Norman period, which, according to tradition, was on the site of the house of Publius, the first bishop. This cathedral was, for about 300 years, the only large church on the island. However, Ferris says that its style was Gothic. In the choir, behind the main altar, is Mattia Preti's monumental painting of the conversion of St. Paul. It was in the original Norman church and survived the earthquake.
From the old cathedral there was a bell and the door, which was originally an outside one, leading into the sacristy. The 13th century chapel at Halmileri can be referred to as Norman as well. The chapel of the Annunciation is situated in the old village of Halmileri, which lies between Zurich, Rendi, Abba and Kirkop. This village was first documented in 1419, and its origins date back to Roman and possibly prehistoric times. This chapel contains 11 frescoes, blending Byzantine influence with early Romanesque traits. The Halmileri frescoes depict an archaic selection of apostles, martyrs, and saints venerated in Maltese churches before the 15th century. The painter may have been a Sicilian by the name of Garinu, whose signature was discovered below the surface of the St. Agatha and St. Blaise panel. Further excavations yielded the foundations of an earlier chapel. This must have been earlier than the 15th century and possibly dates back to the 13th century when Christianity was re-established in Malta under Emperor Frederick II. Count Roger died on the 22nd of June 1101 and was buried in the Santissima Trinità of Mileto. All these legends can be traced back to Malaterra, Abela, and later historians. With such a powerful depiction of Count Roger made by such historians, in addition to the persistence and tenacity of folk memory and certain place names, the Count Roger legends in Malta are unlikely to be forgotten or die out easily. One fact emerges clearly from these facts and legends. Count Roger, who led his men against the Arab rule and who possessed the same virtues and weaknesses as other leaders of his day, is replaced by tradition, a chivalrous and heroic warrior, the perfect count who crossed over from Sicily to conquer the Arabs and free the oppressed Maltese, create the Consiglio Popolare, and provide the Maltese Islands his colors. One may say that the Norman legends, sustained by popular writings, represent the heritage of the religious and geopolitical situation of the later Middle Ages and early modern times, and not directly of Norman times. Norman heritage itself has barely left anything to remember, and is in effect less than the Arab period, seeing that the latter period is well represented by the existence of the Maltese language itself. In effect, the first Norman conquest of Malta was of no profound historical significance, except for this episodic character. Malta remained Muslim until long after the more definite conquest of 1127 by Roger II. According to Telesina, Roger II also left Malta in a hurry when he received the news that the Prince of Capua and the Duke of Puglia had died. The Duke did not leave any document nor shown publicly any wish to leave his dukedom to the Norman. The Normans simply disappeared in history. Although this might sound like a failure, in effect, it was the key to their success as their legacy lived on. They came, they saw, they conquered, until they assimilated themselves out of existence. The Normans, apart from creating a medieval blueprint for aggressive colonialism, also showed that people of different languages and different religions can live side by side, telling us today
that looking back, we still have much to learn. Okay, so you are here, Pallavi. यस कैसे Welcome back. लगी आपको ये मूवी? It was a documentary, docu-drama और बहुत अच्छा था और जितनी खूबसूरती से इतिहास को दिखाया है एंटरटेनमेंट के साथ, that was really nice. What do you think? मुझे तो घूमना फिरना बहुत पसंद है और इस मूवी के थ्रू मैंने बेसिकली बहुत सारी चीजें घूमी. हर एक फ्रेम में कुछ नया देखने को मिल रहा था, कुछ नया जानने को मिल रहा था. मेरे इंटरेस्ट का पर्सनली बहुत चीजें थी इसमें. सो आई लव दिस डॉक्यूमेंट्री अ लॉट. Okay. So yes, डॉक्टर अल्पना जी ने बोला है बेहतरीन वृत्त चित्र. मोनिका डावर जी, fantastic. Thank you so much. You love this film. You love this documentary. Basically, it is a docudrama. सोनू सिलन ने लिखा है बीते समय को बेहतर तरीके से पेश किया है, काबिल तारीफ. So I'm just going to congratulate the director Maurice Micallef. This was, ladies and gentlemen, The Normans from Malta, directed by Maurice. Big congratulations to them. Or the next film, Pallavi, you're going to announce the next film? So our next film is Ambala Kuthan. The duration of the movie is 10 minutes 28 seconds. 22 minutes and 28 seconds, sorry. Yes. And from India and directed by Rajesh Khanna. राजेश खन्ना जी डायरेक्टर हैं भाई. हो. Okay. Yes. So let's watch the next film, Ambala Kuthan from India, directed by Rajesh Khanna. கடவுளே எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ப்பா. சிவவும் நம சிவாய சிவ சிவ ஹரனே சோணாச்சலனே அண்ணாமலையே போற்றி ஹரவும் நம சிவாய அனலே நம சிவாயம் அழலே நம சிவாயம் கனலே நம சிவாயம் ஆற்றே நம சிவாயம். ஹலோ, ஒரு 10 நிமிஷத்துல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருப்பேன். இதோ கிளம்பிட்டேன். அண்ணா, ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதை சொல்ல தான் கால் பண்ணேன். என்னப்பா, என்னாச்சு? என்ன தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க? அதான் 21 நாள் லாக்டவுன் போட்டுருக்காங்கல்ல. சண்டே ஒரு நாள் தானப்பா சொன்னீங்க லாக்டவுன். என்ன நாட்டு நடப்பே தெரியாம இருக்கீங்க? நியூஸ் எல்லாம் பாக்குறது இல்லையாண்ணே? காலமா ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் தூங்கிட்டப்பா. சரி, அடுத்த 21 நாளைக்கு ஷூட்டிங் எதுவும் கிடையாதுண்ணே. அப்படி ஏதாவது இருந்தா நானே கால் பண்றேன். சரிப்பா. ஏற்கனவே டான்சர்ஸ்க்கெல்லாம் வேலை கம்மியாயிடுச்சு, அதில் இது வேறையா? நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்.
21 நாட்கள் கடைபிடிக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு. என்னம்மா சொல்லு. கதிரை கொஞ்சம் பாத்துக்கிறீங்களா? ரேஷன் கடை வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன். ரேஷன் கடையில என்ன கொடுக்குறாங்க? ஊர முடி ஒரு வாரம் மேல ஆச்சு. இப்பதான் ஏதோ டோக்கன் கொடுக்குறாங்களாம். அதான் போய் என்னன்னு பாத்துட்டு வந்துடுறேன். சரிம்மா, நீ போயிட்டு வா, நான் பாத்துக்கிறேன். மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சாப்பிட்டியா கதிரு? டேய், டிவி சவுண்ட கம்மி பண்ணிட்டா. சாப்பிட்டியான்னு கேட்டேன். சாப்பிட்டேன் தாத்தா. டேய், எங்கடா போற? போர் அடிக்குது தாத்தா, நான் வெளியே போயிட்டு விளையாட போறேன். இல்ல போக கூடாது, உள்ள வா, உனக்கு ஒரு விளையாட்டு கத்து கொடுக்குறேன். என்ன தாத்தா இது? லூடோ மாதிரி இருக்கு. இதான் பரமபதம். ஒரே பாம்பு ஏனிமா இருக்கு. இந்த ஏனியை பிடிச்சா ஏறி போயிடுவோம். இந்த பாம்பு கடிச்சா இறங்கி வந்துடுவோம். இதோ இருக்கே, இதான் இலக்கு. இந்த இடத்த முதல்ல யார் அடையிறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சவங்க. இது போலதான் நம்ம வாழ்க்கையும். நீ விளையாடு. 4 1 2 3 4. ஜாலியா இருக்கே இந்த விளையாட்டு. 6 போட்டிங்களா? சூப்பர். இப்ப நானு சொல்லி கொடுத்ததே நீங்க தான். ஆனா ஒரு வாரமா நான் தான் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கேன். நீங்க எப்பதான் ஜெயிப்பீங்க? கதிரே, கதிரே, இதோ வரமா. சரி, வண்டி டியூ தானே, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ. பணம் வந்த ஒன்னு கட்டிடுறேன். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். பாப்பா முகம் லாக்டவுன் வந்து உன்னை ஆளே காணோம். நீ என்னப்பா கத்தியும் கைமா வர இருக்கிற? இல்லப்பா, காய்கறி நறுக்கிந்தப்பா. பாப்பா உள்ள மாஸ்க் வேறப்பா, மூச்சே விட முடியல. உட்காருப்பா. டீ காபி ஏதாவது சாப்பிட்றியா? அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா. ஆமா, என்ன டல்லா இருக்க? உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையாப்பா? கொஞ்ச நாளாவே உடம்பு சரியில்லை, அதான் ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு வந்தேன். பார்த்துப்பா, நாடு பூரா கொரோனா கொரோனா சொல்லி இருக்கு. உடம்பு பத்திரமா பார்த்துக்கோ. சரி, என்ன விடு. நீ எப்படி சமாளிக்கிற ஷூட்டிங் எல்லாம் இல்லாம? எனக்கு என்னப்பா, யூனியன்ல 1500 ரூபா கொடுத்தாங்க, 25 கிலோ அரிசி மூட்டை கொடுத்தாங்க, அதை வச்சு நான் ஓட்டிக்கிறேன். பரவாயில்லையே, உங்க யூனியன்ல இவ்வளவு செய்யறாங்களே. எனக்கெல்லாம் யார் இருக்கா? என்ன குடும்பம் குட்டி எல்லாமே உனக்கு இருக்கு. என்ன சொல்லு, ஒண்டி கெட்ட செத்து போனா கூட தூக்கி போட நாதி என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட? நான் இருக்கேன்டா உனக்கு. இவ்வளவு வருஷமா பழகி இருக்கோம், பட்டுன்னு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டிய. ஆமா, அயன் கடை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? அதை ஏன்பா கேக்குற? இந்த டைம்ல யார் வெளியே போறா அயன்லாம் பண்றதுக்கு? கடை திறக்கிறதே இல்லப்பா. இது சாப்பாடு ஆக்ஷன் பாக்குறேன், சாப்பிட்டு போலாம். இருக்கட்டும்பா, அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம். கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக நடிகரும் இயக்குனருமான ராகவா லாரன்ஸ் 3 கோடி நிதி தினக்கூலிகள் மற்றும் ராயபுரம் ஏழை மக்களுக்காக 75 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு. என்ன மனுஷங்க கோடிக்கணக்கில் செஞ்சிருக்காரு.
இது மட்டும் இல்லப்பா, இவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன். இது மாதிரி நிறைய செஞ்சிருக்காரு. நல்ல மனசுப்பா, புண்ணியவா, நல்லா இருக்கட்டும். ஆமாப்பா, நல்லா இருக்கட்டும்பா. முருகா, அப்ப நான் கிளம்புறேன். இருப்பா, சாப்பிட்டு போப்பா. இருக்கட்டும்பா, நான் இன்னொரு நாள் வர்றேன். இருப்பா. போன முறை இந்த புக்கை வச்சுட்டு போயிட்ட, அதை எடுத்துட்டு போ. என்ன உடம்ப பார்த்துக்கோ. சரி, நான் பார்த்துக்கிறேன். உனக்கு ஏதாவது தேவைன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. சரிப்பா, நான் ஃபோன் பண்ணுறேன்ப்பா. மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு போ. சரிப்பா. பார்த்து பார்த்துடும். நைனா, நம்ம கஸ்தூரி வீட்டில் டவுன் கொடுத்தா யாருப்பா? நம்ம வார்டில் வட்டச்செயலாளர் சாலானா இருக்காருல்ல, வர திங்கக்கிழமை மளிகை சாமான் கொடுக்குறாரு. அதுக்காக டவுன் கொடுக்க வந்துக்கிறோம். வேண்டாப்பா, எனக்கு தேவையானது எல்லாம் இருக்குது. யாருக்காவது இல்லாத பட்டவங்க கொடுத்துருப்பா. சரி நைனா, கிளம்புறோம். சொல்ல மகம், எப்படி இருக்க? இருக்கேன்ப்பா, ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் வந்தேன். திடீர்னு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க சொல்கிறாங்க. பயமாக இருக்கு, அதான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன். இதில் பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தானே, எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுமா? 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கே என்கிட்ட காசு இல்லை. இதில் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டா லட்சக்கணக்கில் ஆகும். அதனால தான் ஸ்கேன் கூட எடுக்காமல் விட்டுறலான்னு பார்க்குறேன். இப்போ கையில் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்க? 4000 ரூபா இருக்கும். சரி, லாரன்ஸ் மாஸ்டர் கொடுத்ததில் யூனியனில் 5000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. நான் உனக்கு அமுச்சு வைக்கிறேன். நீ முதல்ல ஸ்கேன் எடு, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஹலோ, சொல்லுங்க முருகண்ணா. யூனியனுக்கு ஃபோன் பண்ண, யாருமே ஃபோன் எடுக்க மாட்டீங்க. லாக்டவுன் இல்லைண்ணே, அதனால யூனியன் க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. சொல்லுங்க, என்ன விஷயம்? ஷூட்டிங்ல எப்போ ஆரம்பிப்பீங்க? ஷூட்டிங்கா? அதுக்கெல்லாம் இப்போதைக்கு வாய்ப்பே இல்லைண்ணே. லாக்டவுன் முடிஞ்சாதான் தெரியும். ஒன்றும் இல்லைப்பா, ரிட்டைர்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தா எவ்வளோப்பா காசு கிடைக்கும்? என்னண்ணா திடீர்னு ரிட்டையர்மெண்ட் பற்றிலாம் கேட்குறீங்க? என்ன மேட்ரு? இல்லைப்பா, அவசரமாக பணம் தேவைப்படுது, அதான். ஆல்ரெடி 15 பேர் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா. உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 5 வருஷம் ஆகிடும். சரி, நான் பார்த்துக்கிறேன். ரொம்ப நாளாக ஸ்கூல் போகாமல் சார் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்க போல. நீங்கள் கூட தான் வேலைக்கு போகாமல் ஜாலியாக இருக்கீங்க. கொரோனாலாம் போனால் தான் ஸ்கூல் திறப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ தாத்தா, நான் தினமும் சாமியை வேண்டிகிட்டே இருக்கேன், இந்த கொரோனால போகவே கூடாதுன்னு. டேய், மதியம் என்னடா சாப்பிட்ட? இல்லை தாத்தா, வீட்டில் எதுவுமே இல்லைன்னு அம்மா சமைக்கல. கதிரு, இதை எடுத்து போய் அம்மாட்ட கொடு. கதிரு, தாத்தா அண்ணா பாட்டு டிவில வந்து பாரு. தாத்தா தாத்தா, கொஞ்சம் சீக்கிரம் டிவி போடுங்களேன். இதுக்குடா கண்ணா? நீங்க ஆடின பாட்டு டிவில போட்டுக்கிறாங்க தாத்தா. என்ன தாத்தா, ஒண்ணுமே வரல? தெரியலடா. சரி வாங்க, எங்க வீட்டுல போய் பார்க்கலாம். நீ போய் பாரு, நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன். இப்போ தானே ரீசார்ஜ் பண்ண மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள 3 மாசம் ஆயிடுச்சா? இங்க முருகா யாருங்க? முருகா, நான் தாங்க. என்ன விஷயம்? 4-5 மாசமா டியூ கட்டாம இருக்கலாமே, அதான் சேட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாரு. இல்லப்பா, சீக்கிரம் பணத்தை கட்டிடுறேன்ப்பா. பெருசே, சும்மா பேசினே இருக்காம உள்ள போய் பணத்தை எடுத்துன்னு வா, இல்லனா வண்டியை குத்துரு. ஐயா, வண்டி தான் வேலைக்கு போக கொள்ள. ஓ, பேசினே இருக்காத, மரியாதை கட்டுறோம். தம்பி இருப்பா, போய் வண்டி செய்ய எடுத்துன்னு வா. இதுங்கெல்லாம் மரியாதை குத்தா வேலைக்கு ஆகாது. பணத்தை கட்டிட்டு வந்து வண்டி எடுத்துன்னு போ. முருகண்ணா, வீட்டில் இருக்கீங்களா? முருகண்ணா,
என்ன விஷயம் தம்பி? உள்ள வாங்க. பரவாயில்ல உட்காருங்கண்ணா. ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு போகலான்னு வந்தேன். என்ன விஷயம் தம்பி? கொஞ்ச நாளாக வாடகை தரதில்ல. கொடுத்த அட்வான்ஸும் கழிஞ்சிச்சு. வாடகை கொஞ்சம் தர பாருங்க. நாங்களும் இதை நம்பி தான் இருக்கோம். தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. வாடகை தர முடியலன்னா வீடை காலி பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அந்த இபி பில்லும் கட்டாமல் இருக்கீங்க, அதை கட்ட பாருங்க. இல்லைன்னா ஃபீஸ் பிடிங்கிடுவாங்க. கேட்டுக்கொள்கிறோம். கொரோனா ஊரடங்கை முன்னிட்டு மண்ணின் மைந்தன் தொழிலதிபர் வினோத் மாரிமுத்து அவர்கள் நமது வார்டு மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்குகிறார். அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி அன்னதானத்தை பெற்றுச் செல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். யாருக்கா இறந்தது? நம்ம அயன்கடை ஆறுமுகண்டி. யாரு? நம்ம நைனாவோட ஃப்ரெண்டா? ஆமாண்டி, அவரே தான். ரொம்ப நாளா உடம்பு சரியில்லாம இருந்தார்ல, அவர் தான் இறந்துட்டார். அட கடவுளே, யாருக்குமே சொல்லவே இல்ல. கொரோனா டைமா இருக்குல்ல, எப்படி சொல்லுவாங்க? நல்ல மனுஷன். எல்லாம் நேரம். பணம் தான் இல்ல, பணம் இருந்தா காப்பாத்திருக்கலாம். என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட? நான் இருக்கேன்டா உனக்கு. இவ்வளவு வருஷமா பழகி இருக்கோம், பட்டுன்னு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டிய. உனக்கு ஏதாவது தேவைன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. அந்த இபி பில்லும் கட்டாமல் இருக்கீங்க, அதை கட்ட பாருங்க. இல்லைன்னா ஃபீஸ் பிடிங்கிடுவாங்க. Camera. Action. Song. Ready, one, go. முருகனா செம்மையா நீங்க முருகனா கலக்கிட்டீங்க. ஷூட்டிங்கா? அதுக்கெல்லாம் இப்போதைக்கு வாய்ப்பே இல்லைண்ணா. சும்மா
பேசினே இருக்காத, மரியாதை கட்டு. போய் வண்டி சேவை எடுத்துருவான். வாடகை தர முடியலன்னா வீடை காலி பண்ணிடுங்க. தாத்தா நைனா, கதிரிக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள், ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. இந்த பேனா பென்சில் ஏதாவது வாங்கிக்கோடா. இந்த சாவியை ஓனர் வந்தால் கொடுத்துடுமா. எங்க தாத்தா போறீங்க? எப்போ வருவீங்க? கைத்தடி தேடும் வயதில் கையேந்த மனமில்லாமல் மாற்றங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் பாதைகளற்று தொலைந்து போகிறேன் நான் புதியதொரு பயணத்தை தேடி.
So yes, that was Ambala Kuthan from India, directed by Rajesh Khanna. कैसी फिल्म लगी पल्लवी आपको? एक्चुअली सौरभ, ये फिल्म कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ को टच करती है, क्योंकि कोरोना में हम सभी ने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फेस की हैं। तो काफी टचिंग मूवी थी, हार्ट टचिंग मूवी थी और मुझे काफी पसंद आई। तो अब बताइए सौरभ कि हम नेक्स्ट फिल्म कौन सी देखने वाले हैं? नेक्स्ट में जाने से पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। वसुंधरा व्यास जी ने लिखा है, मर्म स्पर्शी फिल्म, बहुत सुंदर। रीमा नैन जी ने लिखा है, मार्मिक और बहुत ही सूक्ष्म फिल्मांकन। और गौरी जी ने लिखा है, फिर एक न्यू उमंग के साथ एक उम्मीद। सो आई गेस कि ये कमेंट्स ये शो करते हैं कि ये फिल्म बहुत पसंद आई है लोगों को। और एक कमेंट्स भी बीच हाँ, बहुत बीच में कमेंट्स आ रहे थे कि ये फिल्म दोबारा चली है। बिल्कुल ये फिल्म दोबारा चली है। और कल जैसा कि यशपाल सर ने मेंशन किया कि कल बफरिंग हो रही थी। और एक बहुत बड़ा कारण और है इसको दोबारा चलाने का, कि ये फिल्म खास तौर से सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री पे लॉकडाउन का जो असर हुआ कलाकारों पर, उसको इतनी खूबसूरती से और इतने मर्म स्पर्शी तरीके से इसने दिखाया है कि मुझे लगता है कि अगर हमको इसको दोबारा देखना पड़ा है, और मुझे लगता है कि शायद हमने जितना एंजॉय और जितना खुशी जो महसूस करी, जो इसके साथ हम फिल्म के साथ जुड़े, जितना पहली बार जुड़े होंगे उतना ही अभी फिर जुड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो मुझे लगता है ऐसी फिल्में अगर हमें बार बार भी देखनी पड़े तो हम देख सकते हैं। बट यस, ये यशपाल सर की इच्छा थी कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और हम इसको कल ढंग से नहीं देख पाए थे, तो आज हम इसे फिर से चलाएं। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजेश खन्ना, उनकी टीम, और जो इस फिल्म के एक्टर थे, बहुत कमाल का अभिनय था उनका। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, ओके, सो पल्लवी, व्हाट नेक्स्ट? अगली फिल्म कौन सी है? ये आप बताएंगे हमें कि हमारी नेक्स्ट फिल्म कौन सी है। ओके, सो BIFF लार्ज शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की लास्ट फिल्म है गिल्ट फ्रॉम इंडिया, डायरेक्टेड बाय ओमकार माधव जोशी, and duration is somewhere around 22 minutes. So, can we have the next film? Guilt from India, directed by Omkar Madhav Joshi. Congratulations. नाव काय म्हणालास तुझं? सार्थक ना? ये. तुला ड्रॉ करायला आवडतं? अरे वा, छान. या, बस इथे. हे बघ, हा तुझा कागद, ही तुझी पेन्सिल. यावर तुला हवे ते ड्रॉ कर. करशील? गुड बॉय. हे बघा मिस्टर आणि मिसेस कुलकर्णी, मारून धोपटून काहीच उपयोग नाही होणार. कारण या वयामध्ये काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, हे आपण त्याला समजावल्याशिवाय त्याला नाही कळणार. म्हणजे कुठल्याही एखाद्या घटनेवर किंवा एखाद्या गोष्टीवर कसं रिॲक्ट व्हायचं, हे सगळंच तो तुमच्याकडे पाहून शिकणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर तुम्ही विकिपीडिया आहात त्याच्यासाठी. मुळात त्याने केली ती चूक की तो एक प्रयोग होता, हे आपल्याला समजायला हवं. सो स्टे काम, नॉट टू वरी अबाउट. फक्त जरा ऑब्झर्व करत राहा आणि मला अपडेट करा. ये, गुड जॉब. या तुम्ही, आणि जस्ट बी पॉझिटिव्ह. वेलकम. बाय. हे सार्थकचं ड्रॉइंग आणि हे सकाळच्या काही पेशंट्सचे रिपोर्ट्स. बरं ऐक ना, मला जरा उशीर झालाय, मला निघायला हवं. हां,
आणि हे सगळं मी नंतर बघते. जरा हरीशला सांग माझी पर्स गाडीमध्ये पाठवायला. ओके मॅम. बोल सचिन. काय बोलू? अरे फोन केला होतास ना? तो खूप आधी केला होता मधू. उद्या प्रेझेंटेशन आहे ना तुझं? झाली तयारी? झाली. आणि सोहमशी बोलणं झालं का रे काही? हो, मगाशी स्काईपवर बोललो आम्ही 10 मिनिटांसाठी. काही पोटाची कुरकुर नाही ना केली त्याने? का? परत पोट दुखतंय का त्याचं? नाही, तू सांगितलं नाहीस मला. मुळात तुला माझ्याशी बोलायचंच नसतं. नाही, असं तर नाहीये ना की तुला माझ्याशी बोलण्यात आता इंटरेस्टच उरलेला नाहीये. तू मगाशी सुद्धा माझा फोन कट केला होतास. त्यावेळेला सेशन मध्ये होते मी सचिन. ते सगळं सोडून हाऊ कॅन आय अटेंड युअर कॉल? म्हणून थोडा उशीर झाला फक्त. थोडा? 2 तास वाट बघत होतो तुझ्या फोनची. उद्या दिवसभर मी कामात असणार आहे. तू शांत होणार आहेस का जरा सचिन? तू ज्या वेळेला US ला जायचा निर्णय घेतलास ना त्यावेळेलाच मी तुला अंदाज दिला होता. आता त्यावरनं अपसेट होणार आहेस का तू? सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. सॉरी नाही रे, आपण छान बोलूया का प्लीज? खरं तर त्यासाठीच मगाशी फोन करत होतो. बरं मला सांग, कसा गेला तुझा आजचा दिवस? हां, पेने बॉईल करताना थोडं ऑइल घालायचं. ओके. नाही, ग्रेव्ही मी थिकच ठेवणार आहे. सोहमला तशीच आवडते ना. हां, ओके. हां हां, पाणी. हां, मी करते तुला झाल्यावर. ठेव. हां. काय रे, पाणी काय एकदम? पोट बरं आहे ना? हो हो. रंग तरी आलाय तुझ्यासारखा. आता आमच्या सोहमला आवडतोय. अरे मी बोलते फोनवर. हां, आता आलाय तो, बघते त्याला आवडते का. हां, बोलू नंतर. बाय. आई अजून किती वेळ ग? मला भूक लागली. तुला किती वेळा सांगितलं गॅसच्या शेजारी लहान मुलांनी बसायचं नाही म्हणून? आई, मी ना आता मोठा झालोय. मोठा झालाय म्हणे. चव बघ आधी ह्याची. झालाय का, शिजलाय का जरा बघ. वांग पास्त्यात वांग कोण टाकतं का? हे भलते एक्सपेरिमेंट ना तू माझ्यावर नको करत जाऊ. काही एक्सपेरिमेंट वगैरे करत नाही हा. उगाच नाटकं करू नकोस. आणि तुला विचारून केला होता, आता खायला लागेल. मी नाही खाणार पास्त्यात वांग. शी, छान लागतं. उतर आता, उतर. मी सांगितलं नाही बसायचं.
बोलवलं मला? आजच्या अपॉइंटमेंटचं स्टेटस काय आहे? आणखीन 2 आहेत. एक काम कर, कॅन्सल कर. मला जरा जावं लागणार आहे कामासाठी आणि अगदी इमर्जन्सी असेल तर करशील मॅनेज? ओके मॅम. हॅलो सर. हा तुमचा दुसरा घोडाही शहीद. कमाल आहे, एवढा मोठा हत्ती दिसला नाही तुम्हाला? हत्ती? हा. मला तर पराभव दिसतोय. येस, तुमच्याच चालीत अडकलात तुम्ही. चेक. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हो. आता माझ्या म्हणण्याप्रमाणे हा माझा चेक आणि मेट सुद्धा. नाही समजला? अलेक्सा, प्लीज एक्सप्लेन. बुद्धिबळामध्ये सॅक्रिफाईस थिअरी काय असते नीट समजावून सांग बाईसाहेबांना. ओके, सांगते. सॅक्रिफाईस थिअरी. सॅक्रिफाईस थिअरी ही बुद्धिबळातल्या काही महत्वाच्या थिअरींपैकी एक आहे. समोरच्या व्यक्तीला शह देण्यासाठी ए आपल्या सैन्यात कोणतरी आले, मी बघून येतो. बी समोर. अरे वा वा वा, तू अगदी माझ्यासारखी वेळेवर आलीस की. या, दार बंद कर. या. बरं झालं. अशा प्रकारची खेळी चांगल्यातल्या चांगल्या प्रतिस्पर्ध्यावर काय घेतेस? चहा, कॉफी? ही चाल समजून घ्यायची. अलेक्सा, प्लीज बंद हो. पाहुणे आलेत आमच्याकडे. की यांच्यासारखं सरबत देऊ तुला सब्जा घालून? माधवी, ती काय विचारते? सरबत हवे का तुला? हो, पण मला मिळेल त्या निमित्ताने. चालेल. सरबत आहे, सरबत आहे. बोल. अलेक्सा, व्हॉट डू यू थिंक? सोहमला वाईट वाटलं असेल? मला माहित नाही. बघितलं मधू, टेक्नॉलॉजीनी संपूर्ण जग जिंकलेलं आहे, पण मनाचा गुंता हा माणसाला सोडवायला लागतो. या सगळ्या प्रकरणामध्ये मला सोहमबद्दल काळजी वाटते. तुला मी अप्रिशिएट करतो, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. मी ज्या वेळेला घडलं त्यावेळेला तुला राग आला, तुझी चिडचिड झाली, तू हातामध्ये काठी घेऊन त्याच्यामुळे धावलीस. यावेळेला तुझ्यातली आई रिॲक्ट झाली, पण ज्या वेळेला तू दारापाशी जाऊन थांबलीस यामध्ये तुझ्यातला काउन्सिलर रिॲक्ट झाला. आणि मला असं वाटतं की एका काउन्सिलरनं स्वतःला काउन्सिल करणं इतकं सोपं नसतं. सर, पण आज काउन्सिलर म्हणून नाही तर एक आई म्हणून माझ्याकडे खरंच उपाय नाहीये. उपाय?
सोहम, सोहम मी आली आहे. सोहम. हां ठीक आहे. सोहम, गार्लिक ब्रेड करते, खायला ये. आई मला भूक नाहीये ग, तू खाऊन घे, वाटलं तर खाईन मी नंतर. पण मला काहीच कळत नाहीये मधू. त्यानंतर तू काही बोलला का तुझ्याशी? कसलं काय, मी घरी आल्यापासून अजून समोरही आला नाहीये तो माझ्या. कठीण आहे. पण मग यावर उपाय? उपाय तुम्ही मुलं माझ्या केस स्टडीचा उपयोग स्वतःचं पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफमध्ये उत्तरं शोधण्यासाठी नेहमीच करत असता. मी आज तुला एक अशी केस स्टडी सांगणार आहे की ज्याचं उत्तर कधी सापडलेलं नाही. ही केस स्टडी एका आईची आणि तिच्या पिल्लाची. दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, दोघांचं एक वेगळंच विश्व आहे. एक दिवस अचानक त्या पिल्लाला जाणवतं की आपल्यामध्ये काहीतरी बदल होतोय. स्वतःशीच नव्याने ओळख व्हायला लागते. कानशिला तापतात, श्वास गरम व्हायला लागतात. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला हव्याशा वाटतात. आणि एक दिवस तीच चूक त्याच्यातून घडते जी सोहमच्या हातून घडली. नकळतच तो एक स्पर्श स्वतःला नर असल्याची जाणीव करून देतो. पण समोर असलेली व्यक्ती स्वतःची आईच आहे कळल्यानंतर एक पायरीवर चढलेलं ते पिल्लू स्वतःच्या मनात खूप खोल उतरतं. आई सुद्धा गप्प राहते समाजाच्या भीतीनं. झाकली मूठ सव्वा लाखाची. आईच्या जवळ जायला, तिला मिठी मारायला त्याचं मन सहसा धजत नाही. मध्ये थोडा काळ लोटतो. दोघांना वाटतं की सगळं काही विसरलंय, सगळं हलवेल आहे, ऑल क्लिअर. एक दिवस आई त्याला म्हणते की आता तू मोठा झालायस, कोणाच्या अंगसाठी जाण्यापूर्वी दोनदा विचार कर. त्याच क्षणी तो त्याच पायरीवर उभा राहतो ज्या ठिकाणी त्याची नव्यानं स्वतःची ओळख झाली होती. भूतकाळात घडलेली अशी एक चूक आपल्या अनकॉन्शियस माइंडमध्ये एक गिल्ट म्हणून स्टोअर होते. एक अशी आठवण सहसा कधी न आठवणारी आणि एक अशी आठवण की कधीच न विसरणारी. चालता चालता जरी तो प्रसंग आठवला ना तरी जागच्या जागेत थपकायला होता. किळस वाटायला लागते स्वतःची. सोहमच्या वयात घडलेली ही गिल्ट वयाची 60 आली तरी अशीच राहते. स्वतःला स्वतःच्या नजरेत पाडणारी गिल्ट. सर, अशा कोवळ्या वयात झालेली चूक भविष्यातही चुकीचीच माणसं घडवते असं तर नाही ना. यात वासना कुठेच नव्हती. सोमच्या हातातनं घडलेली चूक ही चूक आहे का एखादा प्रयोग आहे हे समजण्यात तो हुशार आहेस तू मधू. हो सर, पण उपाय? उपाय कदाचित तुझ्या आधी सोमला सापडेल. हॅलो 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 मधू, ऐकतेस ना तू? हॅलो मधू. हॅलो, तू काळजी नको करूस, मी करते तुला फोन. हां बरं ठीक आहे.
सोहम काय करतोयस? का नाही ते तू AC फुल करून ठेवतेस ना तर मला थंडी वाजते. मी बाहेर जाऊ झोपायला प्लीज. अरे पण सोहम अगं ऐकलंस का? जरा सरबत कर ना माझ्यासाठी. आणि किती वर्षे जळजळ थांबवण्यासाठी या सरबताचा आधार घ्यायला लागतोय देव जाणे.